Honorable Shri Milind Murali Deoraji. थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मुझे इस बात पर प्रसन्नता हो रही है कि द टॉपिक हैज मूव्ड एंड बीन एलिवेटेड बियॉन्ड SIR to the larger agenda of electoral reforms. So, listening to the debates over the last few hours, last week, even in the Lok Sabha, हर एक की अलग अलग राय होती हैं कि हमारे लोकतंत्र को हम किस प्रकार से अधिक मजबूत बना सकते हैं. But one thing is clear. Somebody thinks there are imperfections in our democracy, in our electoral system. उन imperfections के बावजूद आज भारतीयों को इस बात पर बहुत गर्व है कि हम न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि हम सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र भी है. And in a nation that is as diverse as ours, we are still, every government, state or central, able to uphold the fundamental democratic promise that every 5 years there is a smooth transition of power. This is something which we must keep in mind across all parties, regardless of which party or ideology we belong to, that this is not something that can be said even of Western nations today. जहां तक इलेक्शन कमीशन, स्टेट या सेंट्रल इलेक्शंस कमीशन की बात है, one point I would like to make, which is slightly different. The health, the efficacy of the election commissions is directly correlated to the health and efficacy of political parties. Few examples I'd like to highlight. जब electoral rolls revise हो रहे हैं, legally ये election commission का काम है, लेकिन practically this is also the job of political parties. Political parties also mobilize their base. हम भी अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि लोगों को register करवा दो. This is also given a power given to all political parties by the Constitution. We also verify names. We also ensure that core bases are not excluded. And हम सभी ने missing names और duplicate voters के मामले में अपने अपने areas में, अपने अपने राज्य में हमने देखे. सर, हमारे खुद के कंस्टिट्यूएंसी में साउथ मुंबई, जो एक प्रकार से भारत का सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र है, दक्षिण मुंबई में कुछ ऐसे बूथ्स हैं जहां 95% वोट्स विपक्ष को मिलते हैं, और हमने देखा है कि उन बूथ्स में ऑलमोस्ट 3 to 5% जो वोटर्स हैं वो डिसीज हो गए, उनकी निधन हो चुकी है, एंड स्टिल दे आर ऑन द वोटर रोल्स. तो इसका साफ मतलब है कि वोटर लिस्ट रिविजन्स कभी भी केवल एक पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाता है. सर, another very important point that I must highlight. So I've got some time from the BJP. Manya Murugan ji, have you given some time to the honorable member from your party? Honorable Shri Milind Deoraji. Few minutes, very few minutes. Sir, the other point I must make, few minutes, is that one thing which is of extreme concern across the House. Today, आज मैं मुंबई का उदाहरण दे सकता हूं. ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो हमारे इलेक्टरल रोल्स पे आ चुके हैं. कुछ ही समय पहले मुंबई में जो एक्टर है सैफ अली खान, उनके जो अटैकर, जो अक्यूज्ड है, उनको एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट होने के इस बात हमें एक रिमाइंडर है कि neighborhood instability threatens not only national security but also electoral integrity. This is something the entire House must take very seriously. The second point of how the efficacy of election commission is directly correlated to the efficacy of political parties. Every party has the ability to appoint polling agents who sit in the booth on election day. They cross-check electoral rolls. They highlight any irregularities. So what is very clear, sir, is that if a party does not have a booth-level network, if a party is disorganized, why disqualify and punish parties that are better organized? This is a classic case of a carpenter, bad carpenter blaming his tools. The third way that the election commission is directly correlated to the health of parties, counting agents on voting day. Counting agents do the same thing. They monitor the entire process. And therefore, जो election commission की effectiveness सीधे political parties के health से जुड़ी हुई है. One last point before I conclude.
हमारे संजय भाई ने बिहार के बारे में बात की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मैस वोटर सप्रेशन हुई थी बिहार में, लेकिन कैन एनीवन बिलीव दैट बिहार जैसे एक पॉलिटिकली सेंसिटिव, एक पॉलिटिकली अवेयर राज्य में, जहां चुनाव अभी अभी संपन्न हुए, कैन वी सीरियसली बिलीव दैट बिहार्स वोटर्स वुड स्टे साइलेंट इफ देयर वोट वाज बीइंग स्टोलन बिकॉज ऑफ एसआईआर? संजय भाई ने कहा कि एक भी बूथ में रीपोलिंग नहीं हुई, एक भी जगह पे वायलेंस नहीं हुई। और खास करके मैं आपके माध्यम से संजय भाई को बताना चाहता हूं कि इसी इलेक्शन में 2 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बिहार के चुनाव में देवर पोस्टेड ओवर देयर. One was from Indonesia, one was from South Africa. The commissioner of Indonesia's General Election Commission, Mr. Idham Holik, what did he say? My experience in Bihar has been very inspiring. Everyone could see that the elections were free and fair. India truly is the land of democracy. South Africa, I'm sorry I can't pronounce this person's name, but Masudebeli Sedula Mama Bobo from South Africa, also the Election Commission of South Africa. What did she say? The election in Bihar were amazing. We learned so many things that we can share in South Africa. The digital system used in India was far ahead of South Africa's paper-based process. So, sir, before concluding, few points I want to make, 4 simple questions before the entire House. सभी राजनीतिक दलों के सामने मैं 4 सवाल रखना चाहता हूं. हमारे पहले जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के सांसद का मेडन स्पीच है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं. उन्होंने जो बात कही, मैं भी उस बात पे सहमत हूं कि MPs and parties come and go, but Parliament and our democracy must endure. Question number 1, not directed at any particular party. Some may have a guilty conscience, that's a separate issue. 78 years after our independence, we call ourselves the largest democracy. Is it healthy that कई political parties democracy के बजाय monarchies की तरह operate करती है? Question number 1. Question number 2, बहुत सारे राज्य में कैश ट्रांसफर्स ने महिलाओं और फैमिलीज को एम्पावर किया है. महाराष्ट्र का मैं उदाहरण दे सकता हूं, इसमें आम महिलाओं के हाथों को हमने मजबूत किया है. बट कैन वी ट्राई टू लिंक सच सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी? There's a saying, if you give a man a fish, he'll eat for a day. If you teach him how to fish, he can feed his family. Let's conclude, please. 3, electoral bonds were an attempt to curb black money in politics. Supreme Court ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. क्या हम एक नया ट्रांसपेरेंट मॉडल नहीं बना सकते? 4, which is a point nobody has spoken about. There are 1.5 crore non-resident Indians who live overseas today. Despite their size, the fact that they haven't given up their Indian passports when they could have done that in the country they reside in, and they send $140 billion home every year, making India the world's largest recipient of remittances, they remain excluded from voting. क्या उन्हें भारत के चुनाव वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहिए? Thank you. Sir, the last point, I believe SIR is a timely process, it's essential, and इसे transparently यदि implement किया जाएगा, I am sure that every living, every eligible Indian will get to vote and get to vote only once. Thank you very much. Thank you.